क्या रोज बेटा कुछ फर्क पड़ा? यस सर, अभी हुई है सर। चलें, फाइन. Okay, जी, last time we did sampling both in time and frequency domain, and we went through all the mathematics behind it, and we had seen the sampling procedure both in time and frequency domain at the same time, so that कि आपका जो insight है इस process में that should increase, and I hope that everything was well understood. And similarly, we went through the reconstruction procedure both in time and frequency domain. And I hope if you have any questions regarding sampling and reconstruction process at any level, both in time and frequency domain, you may ask, please. जी बेटा मेहरताबा, शेरोज, any questions बेटा? नो सर। No, sir. Okay, great. And then we went through the aliasing, and there were certain conditions to avoid aliasing, and we said that if the maximum frequency content is omega n, then we must have to sample it at twice of that maximum frequency content in order to avoid aliasing. So we went through this. ये example कर ली थी बेटा आप लोगों ने? सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। आपका नाम क्या है बेटा? अहमद। जी अहमद, बोलिए. सर आपने दो किस्म की फ्रीक्वेंसीज बताई थी, एक कंटिन्यूस टाइम की और एक डिस्क्रीट टाइम की। सर तो उसका आपने जो रिलेशन बनाया था वो था कि कंटिन्यूस टाइम की फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू डिस्क्रीट टाइम की फ्रीक्वेंसी ओवर टी। सर ये जो ओवर टी है वो मुझे समझ नहीं आ रहा, वो बेटा कि वो डिवाइड बाय टी है, वो दोनों में बस सिंबल चेंज होना चाहिए बस। जी जी, देखिए ओमेगा के, मैं इसको एक मिनट. थैंक यू फॉर आस्किंग. Before moving further, let's move it. Okay, what is omega? That is 2 pi f। omega s is 2 pi s. That is radians per second की बात हो रही है, यूनिट्स की बात कर लेते हैं, ऐसे ही. यस सर। ठीक है, 2 pi f जैसे आपने कहा, इनफैक्ट 2 pi over t है. ठीक है, अच्छा. और जो f है वो क्या होते हैं? साइकिल्स पर सेकंड आर हर्ट्ज. एग्रीड बेटा अहमद? यस सर। Now this is omega, small omega. That's a continuous time frequency. That's discrete time frequency. And that's what? In radians. So omega is equal to what? Omega is equal to small omega divided by t. It is radians, and these are seconds. मेरा ख्याल है यही क्वेश्चन था आपका. जी सर, समझ आ गया। क्लियर हो गई बात? यस सर, थैंक यू। चल, great. Okay, let's move further. And now we are moving towards changing the sampling rate in discrete domain. That you are sitting in discrete domain, and there you are thinking that I must have sampled it at not this much rate. Rather, I'm interested in changing the sampling rate. Rather, I am interested in increasing the sampling rate or decreasing the sampling rate. These are associated with the decimation and interpolation. Decimation means that we want to decrease our samples, and interpolation means that we want to increase our samples. And changing the sampling rate by non-integer factors, and then we will be talking about oversampling, how the oversampling can ease our anti-aliasing filtering as well. So in that context, we start the process of downsampling, and downsampling is in fact
decreasing our samples. यानी आपके पास कुछ samples मौजूद थे and you want to throw away some samples. So if we are passing this discrete time sequence which is x of n, जिसका sampling time जो था वो t था, if we are passing this signal through this decimator, ये symbol है decimator का, where we are interested in, ये arrow down हो रहा है, इसका मतलब है कि हम down sample करना चाह रहे हैं by a factor of m. So in that case जो यहाँ पे xd of n जो होगा, जो decimated signal होगा, that would be in fact with the sampling time t bar which is equal to mt, and in that context we will be throwing away m minus 1 samples and keeping 1 sample out of m samples. So ये अगर सिचुएशन हम देखें, तो ये मेरे पास एक सिग्नल है, 0 पे मेरे पास जो एम्पलीट्यूड है वो a है, 1 पे b है, 2 पे c है, 3 पे d है, 4 पे e है, इसी तरह से चलता जा रहा है, -1 पे f है, -2 पे g है, -3 पे h है, -4 पे i है. So that's my discrete time signal x of n, and now I'm interested in downsampling it by a factor of m, and I'm keeping m is equal to 2. Integer factor में रख रहा हूँ, m is equal to 2. So what is decimator? X of n will be passing through this decimator by a factor of 2 पे ये arrow down हो रहा है by a factor of 2, and as a result of that I will be getting this xd of n. Now the first thing is that what is this xd of n? xd of n क्या कहता है कि आपके पास I will be throwing away m minus 1 samples and I will be keeping 1 sample out of those m samples. So I will be keeping this sample A पे suppose मैंने वही sample रख लिया, उसके बाद मैंने I will be throwing this sample, B sample जो है जिसका amplitude B है, I will be throwing that and I will be keeping this C. फिर मैं D को फेंक दूंगा and then I will be keeping this C. And similarly here, I will be throwing away this F sample and I will be keeping G. I will be throwing this H sample, I will be keeping I. So as I said that from moving from x of n to xd of n, I will be keeping 1 sample and I will be throwing 1 sample because m is equal to 2. Had I gone for m is equal to 3, in that case I will be throwing 2 samples, m minus 1 samples, and I will be keeping 1 out of those 3 samples. So what will happen? I will be keeping A. Suppose I am keeping this A. So in that case, I will be throwing these 2 samples, B and C, and I will be keeping this D. And here, I will be throwing away F and G, and I will be keeping this H. So in this xd of n, for m is equal to 2, the sampling time is t bar, which is equal to mt. And in that case, it would be 2t, and here it would be mt is equal to 3t. So what is happening? The actual signal has a sampling time of t, capital T, and in this signal, the sampling time is t bar, which is equal to 2t, because we are downsampling by a factor of 2. So what is happening? That we are increasing our sampling time, or we are compressing our signal. We are increasing our sampling time here by a factor of 3 and compressing our signal by a factor of 3. Questions, please. So what is decimation in time domain? Have you got it? Yes, sir. सर सर आपने ये जो पता सर ये पता कैसे लगना है कौन सा सैंपल हमने थ्रो करना और कौन सा हमने रखना है? You are starting with some index ना, आपने suppose A से start कर लिया ना, तो A को रखा, फिर B को फेंक दिया m is equal to 2 के लिए, फिर C को रखा, D को छोड़ दिया, फिर E को रखा, इस तरह से चल रहे हैं. इसी तरह से A को रखा है तो F को छोड़ दिया, G को रखा, H को छोड़ दिया, I को रखा. Have I answered your question? सर इससे जी, पहले पिछली स्लाइड पे आपने एक डेफिनेशन लिखी है, वो तो दोबारा बता दें. आपका नाम क्या है बेटा? शेरोज सर. जी शेरोज. Sheroz, downsampling by a factor, by an integer factor m, is essentially the process of keeping every mth sample and tossing or throwing the rest out. So throwing away m minus 1 sample, keeping 1 sample. So here, for m is equal to 3, we are throwing away 2 samples and keeping 1 sample. In m is equal to 2, we are throwing away m minus 1 sample and keeping 1 sample.
Have I answered your question, Sharoz? Yes, sir. Okay. Excuse me, sir. Any other? जी, Bismillah, please. सर हमने यहाँ पर अपने सिग्नल को कंप्रेस तो कर लिया, लेकिन इससे सर हमें अचीवमेंट क्या होगी सर? जी, thank you very much for asking. Now the question is that why we are interested in doing this? क्यों कर रहे हैं हम ये? सबसे पहली बात तो ये है कि चलें decimating का प्रोसीजर हमें टाइम डोमेन में क्लियर हो गया. That what we are doing. We are throwing away n-1 sample and we are keeping one sample of those m samples. और टाइम डोमेन में हम कंप्रेस कर रहे हैं. बट सबसे पहली चीज कि हम क्यों कर रहे हैं ये सब चीज, पहले तो इस चीज को देख लेते हैं. देखिए, there might be a situation कि आपने कहा कि मेरे पास suppose this was the continuous domain में मेरे पास एक सिग्नल का स्पेक्ट्रम था, वो ये था. suppose मैं उसे सैंपल करता हूं, मैं कंसीडर करता हूं कि मेरे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो है वो ओमेगा एन बार है. एक्चुअली इट वाज ओमेगा एन, बट देयर वर सर्टेन स्पेक्ट्रल लीकेजेस एंड आई थॉट कि मैं ओमेगा एन बार पे इसको सैंपल कर लेता हूं. यानी ये मेरी कंडीशन है, ओमेगा एस शुड बी ग्रेटर देन 2 ओमेगा एन बार, और मैं इसको सैंपल करता हूं एंड आई गेट सैंपल्स. एंड ऑफ कोर्स अगर मैं हायर रेट पे सैंपलिंग कर रहा हूं तो ऑफ कोर्स मेरे पास सैंपल्स जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे. जब सैंपल्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो मैं उस डोमेन में, डिस्क्रीट डोमेन में बैठा हुआ था, एंड देन आई थॉट कि यार दीज आर टू मेनी सैंपल्स टू हैंडल. मेरे पास जो हार्डवेयर कैपेसिटी है वो इट्स नॉट एनफ कि मैं इसको हैंडल कर सकूं, या आई एम ओवरबर्डनिंग माय डीएसपी चिप और माय सीपीयू. सो इसका क्या तरीका, क्या होना चाहिए? सो आई सेड कि यार मैं अपने जो सैम्पलिंग मैंने इस रेट पे की है वो ज्यादा हो गई है, और जो एलियासिंग होगी अगर मैं इस रेट पे ओमेगा एन पे करता तो ऑफ कोर्स देयर मस्ट बी हैविंग सम एलियासिंग. तो वो एलियासिंग जो है मैं उसको केटर कर लूंगा, दैट वुड नॉट बी हार्मिंग मी. तो यूं करता हूं कि मैं अपने कुछ सैंपल्स फेंक देता हूं. So that was the main concern, that I'm having more samples. These are difficult to handle. I'm overburdening my system. So for that, I am throwing some samples and I'm keeping some samples. I am keeping those samples, at least इतने samples मैं जरूर रखूंगा कि मेरा original जो content है signal का वो damage ना हो. At least minimum content जो है वो damage ना हो. So that's the कंसर्न कि कम से कम ये वाली चीजें जो है वो डैमेज ना हो. ऑफ कोर्स अगर मैं इस रेट पे करता हूँ तो ये वाली कॉपीज जो है, ये वाला जो पोर्शन है ये वापस आएगा और मुझे डैमेज तो करेगा, लेकिन आई थॉट कि यार ये दैट वुड नॉट अफेक्ट माय सिग्नल टू मच, सो आई कैन लिव विद दैट. और मैं कहता हूँ कि यार मैं इस रेट पे इसको डाउन सैंपल कर लेता हूँ. इमेजेस के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, हो सकता है कि मैंने 2 डायमेंशनल सिग्नल्स में मैंने अपना सैंपल कुछ किया हुआ था, बट क्योंकि मैंने ओवर सैंपल कर दिया था, ओवर सैंपल करने की वजह से मेरे पिक्सल जो थे वो ज्यादा मुझे मिल गए, और मुझे मोर स्टोरेज स्पेस चाहिए थी, या मुझे ज्यादा ट्रांसमिशन टाइम चाहिए था उसको ट्रांसमिट करने के लिए. सो दीज आर द रीजंस जिनकी वजह से मैं डाउन सैंपल की तरफ आई एम इंटरेस्टेड. That why I'm throwing some samples and keeping some samples. Have I answered your question in order to justify that why do we need to oversample, downsample? Yes sir. कोई किसी को कोई कंफ्यूजन अगर हो तो प्लीज इस लेवल पे पूछे प्लीज. जी बेटा, नो क्वेश्चन. सर जैसे वहां पर नेक्स्ट थ्योरम था, वो मुझे बता रहा था कि हमारे पास एक मिनिमम कंडीशन है, तो यहाँ पर मिनिमम कंडीशन क्या होगी कि हमने कितना पोर्शन लेना है? जी 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 जी, उसकी तरफ हम आते हैं, उसकी तरफ हम आते हैं. बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस. बट राइट नाउ वी हैव डिस्कस्ड ओनली 2 थिंग्स. वन, व्हाट इज डाउन सैम्पलिंग, what is the role of factor m in that, and why we are downsampling. ये जो आपने कंडीशन की बात की है इसके ऊपर हम बात करते हैं. जी, इन दो चीजों से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो, that what is downsampling, what is the role of this m in this downsampling procedure, and why we are downsampling, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क.
Okay. So now, in fact, situation है क्या इसको देख लें that XCFT was the original signal and we did some sampling on that and we got X of n and XCFT को हम MT पे अगर sample करें तो we will be getting XD of n, which is the decimated signal, which is this thing. But actually we are not doing this. We are doing this. That XCFT, we are passing it through A to D converter at some sampling time t. We are getting X of n, and now we are interested in throwing away some samples. So that's why we are passing it through certain decimator or downsampler, and as a result of that, we are getting XD of n. XD of n का जो sampling time है, that is MT. And now the important thing is time domain में तो हमें पता चल गया कि what we are doing, we are squeezing the signal in time domain. But what's happening in frequency domain? What is the relation of this x of j omega with xd of exponential j omega? How these two spectrums of the original time domain sequence and the decimated time domain sequences are connected with each other? What's the relation of these two things? Again, this is suppose this is my x of n. That's my x of n. Time domain में हम देख रहे हैं m is equal to 4 है. So what will happen is you will be throwing away 3 samples and you will be keeping 1 sample. So out of these 4 samples, you will be keeping this sample which is there, and then you are throwing away these 3 samples. Now you are keeping this sample. Again, you are throwing these 3 samples and you are keeping this sample. Throwing these samples and keeping this sample, throwing these samples and keeping this sample, and so on. So that's your XD of n. In this signal, you are throwing m minus 1, which is equal to 3 samples, and keeping 1. Out of 4. So that's my x of n, that's my xd of n. Now my question is that here, okay, I'm seeing it, that was the signal x of n. I have thrown some samples away and the signal is squeezed now, compressed now. But what's happening with x of j omega? In fact, there was some x of j omega associated with this signal, and there must be some associated xd of exponential j omega, which is the discrete time Fourier transform of this compressed signal. So what is the relation between these two signals? So from there, as your friend said, that what is the condition on xd of exponential j omega? किस basis पे आप कोई condition है इस बात की कि आप कितने signal samples जो हैं वो throw away कर सकते हैं? We will be looking at that condition through the spectrums. So हम देखेंगे कि क्या कोई spectrums के अंदर linkage क्या है और उस linkage के through हम किस तरह से वो condition जो है वो find out कर सकते हैं. Any questions बेटा इससे related? No, sir. Yes. Okay जी. Let's go. What is x of exponential j omega? That is in fact the discrete time Fourier transform of x of n. So if I'm interested in writing this x of exponential j omega, that is what? That is, हाँ जी, बताएगा कोई x of exponential j omega? वो साहब जिन्होंने ओमेगा और स्मॉल ओमेगा और कैपिटल ओमेगा का डिफरेंस पूछा था वो बता दें. Ahmed, probably you were the one who asked this.
Shahroz. Mehretaba. Sir, x of n exponential e raised to power minus j omega n with summation. No, I am talking about the spectrum. आप बात कर रही हैं वो screwed discrete time Fourier transform की. That you are right as well. That is in fact k is equal to minus infinity to infinity x of n exponential minus j omega n. That's the basic definition of the discrete time signal. I'm not interested in that. I'm interested in how the spectral copies of x of capital omega will be related, and that was 1 over t. K is equal to minus in sampling procedure as a result of sampling procedure what we have obtained, and that was xc of omega over t minus 2 pi k over t. इसमें किसी को कोई confusion है? In fact, that's the same thing. If you are not sure, तो अगर आप अपने previous lecture में जाएं, look at this. X of exponential j omega is equal to 1 over t. K is equal to minus infinity to infinity xc of omega over t minus 2 pi k over t. The multiple copies of x of j omega. Just scale the x's and omega is equal to omega over t replace kar diye. So that was the thing. That was your excess of x of small omega. ठीक हो गई बात? Convinced? Yes, sir. So this is your DTFT of x of n. This is the thing. Now you are interested in knowing what is xd of exponential j omega. So what it should be? It should be 1 over t bar, because now the sampling is here, the sampling time was t, here the sampling time was mt. So this would be 1 over mt. Now with a purpose, I am writing r is equal to minus infinity to infinity xc of omega over mt minus 2 pi r over mt. And now I am interested in knowing that what's the relationship between this xd of exponential j omega and x of j omega, and I want to draw both of these spectrums on a same scale so that the relationship should be clear, and I should be developing some intuition through with these spectrums. So in order to do that, what I'm doing, I'm saying that I'm connecting this r with this k through an equation with I plus km. Okay, m we know, m is a constant which is associated with this d. K is between minus infinity and infinity, so m is constant. K is between minus infinity and infinity, we know it. And in fact, r is between minus infinity and infinity. And what I'm doing, I'm saying that I is between 0 and m minus 1. ये अभी थोड़ी देर में clear हो जाएगा what I'm doing. So k is equal to 0 पे देखते हैं what's happening. So rather I have so k is equal to 0 पे क्या हो रहा है? बल्कि मैं repeat ही कर दूं तो बेहतर होगा. So k is equal to 0 पे क्या हो रहा है? It's one of the valid values. So k is between minus infinity and infinity. So k is equal to 0. I is between 0 and m minus 1. I is always between 0 and m minus 1. So as a result of this, what will happen to this r? R is between G, Shahroz,
R is between Cheros, are you 0 to getting m my- minus 1. Great, 0 and m minus 1. Good, shabash. What about k is equal to 1? K is equal to 1 है. I is again between 0 and m minus 1. What about R? So 0 and m. No, no. गौर से देखिए, आप यहाँ तक पहुंच गए थे m minus 1 तक. दिस टाइम k is equal to 1 है. अगर k is equal to 1 है तो इसका मतलब ये है कि अब आपने कहां तक जाना है. यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम, जब i 0 है तो यू आर एट r is equal to m, और सर जब i m से 2m-1 जी m से लेके 2m minus 1, and similarly when k is equal to 2 and I is between 0 and m minus 1, what is happening? R is between 2m to 3m minus 1. So इसी तरह से ये चलता जाएगा. We will be starting k from minus infinity to infinity, and you are getting different values of r between minus infinity and infinity. And in fact, what we are doing, we are relating this k with this r. So what is happening here? So this is my r. For k is equal to 0, r is between 0 and m minus 1. For k is equal to 1, r is between m to 2m minus 1. For k is equal to 2, r is between 2m to 3m minus 1. And similarly, for k is equal to minus 1, this is k is equal to minus 1 अगर मैं इस साइड पे जाता हूँ. So that would be from 0 to minus m minus 1 plus 1, something like that. So, और इसी तरह से you have related k and r from minus infinity to infinity. Whenever k is between minus infinity and infinity, k is traversing from minus infinity to infinity. At the same time, r is traversing from minus infinity to infinity as well. And in that course, we have introduced some factor I, and as a result of that, we are connecting r and infinity. Why we are connecting it? Because xd का जो summation है वो r पे है, और x of exponential j omega का जो summation है वो k पे है. And I want to relate these two spectrums with each other. Now let's see what's happening. So xd of exponential j omega हमने लिखा था, ये देखिए, ये हमने लिखा था 1 over mt, r is equal to minus infinity to infinity xc of omega over mt minus 2 pi r over mt. So what I will be doing now, I will be replacing r with I plus km. So इस बात का मतलब है मेरी single summation जो है, that would be converted into double summation. One will be for I and the second will be for k, because m is constant. So let's see this. So 1 over mt, I is between 0 and m minus 1, and k is between minus infinity and infinity. xcf omega over mt minus 2 pi k over t minus 2 pi I over mt. कहाँ से आई है ये चीज? ये जो चीज थी आपके पास, जो r था, now that r has been converted. r जो है वो आपने रखा, that is I plus km. So एक चीज हो जाएगी 2 pi I over mt, दूसरी चीज हो जाएगी 2 pi k over mt, that would be 2 pi k over m. So that's the 2 pi k over t. So that's the situation. That's the expression. अब सिर्फ ये किया है कि changing the position 1 over m, I is equal to 0 to m minus 1 and 1 over t, इसमें से 1 over t अंदर ले आए, k is equal to minus infinity to infinity xcf omega over mt minus 2 pi k over t minus 2 pi I over mt, and now we have mt वाला जो denominator है इन terms को इकट्ठा कर दिया है. 1 over t, k is equal to minus infinity to infinity xc omega minus 2 pi I over mt minus 2 pi k over t. ठीक हो गई बात? अब ये है सिचुएशन हमारे सामने. एंड नाउ वी आर इंटरेस्टेड कि हम लिंक करें x df ओमेगा को x ऑफ एक्सपोनेंशियल j ओमेगा के साथ.
Now this is your x of exponential j omega. ये थोड़ी देर पहले भी मैंने लिखा है. That's the thing. That's x of exponential j omega. Wait a second, beta. अस्सलाम वालेकुम. जी बोले. जी रिजवान साहब बताइए. बेटा मैं आ जाऊंगा. तो मैं 12:30 बजे तक आता हूँ. इस वक्त मेरी क्लास हो रही है. मैं 12:30 बजे आता हूँ तो फिर बात करते हैं. ओके अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह हाफ़िज़. जी बेटा. So x of exponential j omega is equal to 1 over t. So we have written this expression, and now we have this expression for x d of exponential j omega. Now if we compare this thing with this thing, the only difference between these two expressions, that's the expression for x of exponential j omega, and that's we have got some segment of the expression in x d of exponential j omega. The only difference between these two is that omega is replaced with omega minus 2 pi I over m. This is the only difference. You can closely look at this. 1 over t, 1 over t. K is equal to minus infinity to infinity. K is equal to minus infinity to infinity. Xc of minus 2 pi k over t minus 2 pi k over t. The only difference is that instead of omega, we are replacing omega minus 2 pi I over m. Rest is same. Yes, no, maybe. कोई comments आपके? Yes, sir. ऐसा ही है. तो इस बात का मतलब ये है कि this portion, this encircled portion जो है आपका, जो इस x d of exponential j omega में रखा हुआ है, that encircled portion is actually x of exponential j omega, but with omega is equal to omega minus 2 pi over m. So what we can do, we can say that x d of exponential j omega, मुझे दोबारा मेरा ख्याल इसको लिखना चाहिए, so that's it. So we can write that x d of exponential j omega is nothing but 1 over m. 1 over m कहाँ से आया? 1 over m इस जगह से लिया. I is equal to 0 to m minus 1. I is equal to 0 to m minus 1. And then this portion, this encircled portion, I am saying this is x of exponential j omega. Yeah, x of omega. It's the same thing. X of omega hai, but at omega is equal to 2 pi I over m. So I will be replacing this as x of omega minus 2 pi I over m. So that's the relation. That's the relationship between dt ft of x of n and x d of n. That's the dt ft of x of exponential j omega. That's the dt ft of x of n, and then they are related with this expression. So let's see. Suppose करते हैं हम m जो है that is equal to 2. Suppose m is equal to 2. What will happen now? X d of omega will be 1 over 2. I is equal to 0 to 1 x of omega minus 2 pi I divided by 2. So if we open it, it would be 1 over 2 x of, for I is equal to 0, what will happen? This portion will be cancelled and we will be getting x of omega over 2 plus x of omega minus 2 pi over 2. Omega minus 2 pi by 2. Great. So we have got this. और अब जरा देते हैं स्पेक्ट्रम के कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा है. x d of exponential j omega. So that's the thing which we have got for m is equal to 2 के केस में. Now suppose करते हैं कि मेरे पास x of omega था कुछ
दैट्स माय, मैं प्लान करता हूँ कि मेरे पास suppose this is my x of omega, ये x of exponential j omega हो सकता है? Have I written it correctly or I have made some mistake? Is it right or wrong? Any volunteer? It should be periodic. It should be periodic, so it's not. So that's why I will have to correct myself. I should have multiple copies, 0 पे, 2 pi पे, और -2 pi. Okay, good. It's 1 over t. कहाँ से आ रहा है 1 over t? ये आपका ओरिजिनल x of exponential j omega अगर आप देखें तो it is 1 over t, multiple copies आपको नजर आ रही हैं. Okay, so that's my suppose original x of n था. अब मैंने क्या किया, मैंने उसको डेसिमेट किया टाइम डोमेन में with m is equal to 2 and you know what's happening in time domain. So what will happen in frequency domain, that would be seen from here. Okay, so what's happening now? x, पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं. What will be my xd of 0? x of 0 क्या है? That is 1 over t. ऐसा ही है ना? So let's open it. So it would be 1 over t, 1 over 2 coming from here. xd of 0, omega को मैं 0 कर रहा हूँ. So that would be x of 0 plus x of 0 minus 2 pi over t, 2 x of minus pi. What is x of minus pi? This is minus pi. This is plus pi. So x of 0 is 1 over t plus 0. So it is 1 over 2t. पहली चीज हमें पता चल गई, जो हमारा xd of 0 है वो उसका एम्पलीट्यूड जो है वो 1 over 2t. लेट्स मूव फर्दर. xd of pi by 2 देखते हैं क्या सिचुएशन. xd of pi by 2, what it will be? 1 over 2 x of pi by 4 plus x of minus 3 pi by 2, and that would be equal to x of pi by 4. suppose pi by 4 जो है वो इधर है, हम कहते हैं 1 over 2t suppose कर लेते हैं. So 1 over 2, it is 1 over 2t plus minus 3 pi by 2 is minus 3 pi by 2 is somewhere over here, that is 0. So that is 1 over 4t. And थोड़ा आगे चलते हैं, xd of pi देखते हैं. xd of pi क्या होगा? That is 1 over 2 x of pi by 2 plus x of minus pi by 2. Both are 0. So that x of pi by 2 is 0, x of minus pi by 2 is 0. So both are 0. So as a result of that, what's happening? So this red will be xd of exponential j omega. 0 पे 1 over 2t. उसके बाद xd of pi by 2 is 1 over 4t, somewhere over here. Similarly here as well, इसी केस में होगा. And xd of pi जो है वो 0 पे है. So इस तरह की सिचुएशन डेवलप हो रही है. जी जनाब, तो रेड सिग्नल जो आपको नजर आ रहा है, that is xd of exponential j omega, which is the spectrum of the discrete version of the downsampled version of your x of n, or the DTFT of the downsampled version of your signal x of n. So what happened? क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है, क्या हुआ?
जी कोई है वॉलंटियर, बताएगा क्या हुआ है? जी बेटा आई एम वेटिंग। कोई नहीं है 42-43 लोगों में से कोई भी नहीं है जो बता सके क्या हुआ है? सर सैंपल टाइम एक तो हमारा सिग्नल एमटी कंप्रेस हो गया। और सिग्नल फिर उसका एम्पलीट्यूड भी 1/mt टाइम आप दो बंदे बोल रहे थे तो मैं शायद समझ नहीं पाया, एक बंदा बोल दे। जी बेटा कोई एक बंदा बता देना। सर टाइम में सिग्नल स्क्वीज हो रहा है और फ्रीक्वेंसी में हमारे पास फैल रहा है। फ्रीक्वेंसी में सिग्नल जो है, गुड, फ्रीक्वेंसी में सिग्नल जो है वो एक्सपैंड कर रहा है। टाइम में आपने देखा था, यू हैड सीन इट इन टाइम डोमेन, व्हाट हैपेंड, टाइम में सिग्नल स्क्वीज हो रहा था। फ्रीक्वेंसी में क्या हो रहा है? फ्रीक्वेंसी में अब आपके पास सिग्नल जो है वो, जो स्पेक्ट्रम है उसका, वो एक्सपैंड कर रहा है। तो एम्पलीट्यूड डाउन हुआ है 1/2t 0 पे, और उसके बाद एक्सपैंड करना उसने शुरू कर दिया। तो अभी थोड़ी देर पहले आपके एक दोस्त ने पूछा था कि इसके ऊपर क्या कंडीशन होगी, तो यहाँ से नजर आ रहा है ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से एक्स ऑफ एन उठाएं और उसको m इज इक्वल टू 3 m इज इक्वल टू 4 पे सैंपल करना शुरू कर दें। हम ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज हमें स्पेक्ट्रम बता रहा है कि देयर इज सर्टेन कंडीशन इम्पोज्ड ऑन दैट। क्योंकि किस फैक्टर पे ये एक्सपेंड कर रहा है? दैट इज एक्सपेंडिंग बाय अ फैक्टर ऑफ 2। ये देखिए π/2 पे जो चीज पड़ी हुई थी वो पाई पे आ गई है, जो π/4 पे पड़ी हुई थी वो π/2 पे आ गई है, तो एक्सपेंड करता जा रहा है ये सिग्नल। तो इस बात का मतलब ये है कि दिस m इज प्लेइंग अ रोल in this expanding, in this expansion procedure. So ऐसा नहीं हम कर सकते कि हमने कोई x of n उठाया and without considering anything हमने कहा जी हम इसमें से 6 सैंपल m इज इक्वल टू 6 रख लेते हैं और 5 सैंपल्स हम गिरा देंगे और एक सैंपल्स रखेंगे और हम अपना सैंपल्स जो है ना उनको डाउन सैंपल कर लेंगे अपने सिग्नल को। नो, वी कैन नॉट डू इट। देयर इज सर्टेन कंडीशंस ऑन दैट, बिकॉज अदरवाइज व्हाट विल हैपन, वी विल बी एक्सपेंडिंग आवर सिग्नल। सपोज अगर मैं कहता हूं कि मैं सपोज m इज इक्वल टू 3 कर देता, क्या होना था? इसको मैं ग्रीन से बना लेता हूं। सो 3 के साथ क्या होना था? इसका एम्पलीट्यूड 1/3t हो जाता और फिर ये इस तरह की चीज एक्सपेंड होता और ज्यादा एक्सपेंड हो जाना था इसमें, ठीक। और इसी तरह से जो मल्टीपल कॉपीज हैं उन्होंने भी एक्सपेंड होना था, तो वो इस तरह से चली जाती। सो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट व्हाट वुड हैपन, अब आपके पास एलिएजिंग होना शुरू हो जाती, मल्टीपल कॉपीज जो हैं वो एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर करना शुरू कर देती, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपको इस इंटरफेरेंस को हम क्या कहते हैं? एलिएजिंग कहते हैं। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस एलिएजिंग हमें चाहिए कि हम दूसरी कॉपीज में इंटरफेयर ना करें, और वो ना करने की कंडीशन जो है हमें कहां से मिलती है, वो हम जाएंगे इनफैक्ट अपना इस चीज को देखेंगे कि इश्यूज विद द सैम्पलिंग रेट। सो व्हाट वाज द ओरिजिनल सैम्पलिंग रेट हमारा क्या था? हमने कहा था कि ओमेगा एस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 omega n. That was the original condition or Nyquist criterion with our original x of n. So omega s is what? It is 2 pi over t. 2 pi over t should be greater than 2 omega n. So pi over t should be greater than equal to omega n from here. ठीक है? अच्छा, अब मैं सैंपल कर रहा हूं पाई बाय टी बार पे। तो देयर वी वर सैम्पलिंग ओरिजिनल एक्स ऑफ एन में ये कंडीशन थी। अब मेरा सैम्पलिंग टाइम चेंज हो रहा है। सैम्पलिंग टाइम क्या है? पाई बाय टी बार है, एंड टी बार इज इक्वल टू mt। सो पाई बाय mt इज ग्रेटर देन इक्वल टू ओमेगा n, और अगर मैं 2 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करूं तो दिस वुड बी व्हाट? दिस इज माय 2 pi by t is omega s, and that omega s should be greater than 2m omega n. So now this is the new condition for downsampling. और अगर मैं इसको fs के कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो 2m fn. So suppose I'm sitting in continuous domain and I'm planning to downsample my samples after going into the discrete domain. So I will be following this condition.
suppose XCFT मेरे पास है and XCFT is a speech signal, the maximum frequency content FM is 4 kilohertz. तो अगर मैं प्लान कर रहा हूं कि मैं इसमें से बाद में जब मेरे पास x of n होगा तो मैं इसको डाउन सैंपल करूंगा by a factor of 2, तो I will be following this condition 2mfn को. fn is 4 kilohertz. अगर मुझे डाउन सैंपल नहीं करना तो मैं इसे 8 किलोहर्ट्ज पे सैंपल करूंगा and I will be getting my x of n. But if this is a situation that I'm interested, that there is a possibility that I will be downsampling it by a factor of 2, in that case, what I will be doing 2 into 2 into 4, which is 16 kilohertz. And this 16 kilohertz ki sampling of this XCFT will allow me to sample, to downsample by a factor of 2 without any aliasing. मैं aliasing नहीं कर रहा हूँगा. मेरे सिग्नल्स जो हैं इस केस में अगर मैं देखता हूँ जो हम देख रहे थे, there will be no overlapping of the spectrum of my XD of n multiple copies का जैसे रेड वाला था वो इसी तरह की सिचुएशन होगी. लेकिन अगर मैं सैंपल तो करता हूँ 16 किलोहर्ट्ज पे और मैं जाता हूँ 3 सैंपल्स फेंकना शुरू कर देता हूँ x of n के अंदर, तो what will happen कि x of n का जो स्पेक्ट्रम होगा और xd of n का जो स्पेक्ट्रम होगा that would be having aliasing in the multiple copies of that. Have you got it? Yes, sir. Okay. क्या कब तक होता है टाइम आपके क्लास का? Sir, 11:25. 11:25. So we stop it here. और फिर आपकी अटेंडेंस भी करनी है तो इनफैक्ट फिर हम कल इंशाल्लाह ताला इसको लेके जाए. Yes, sir. अच्छा.